differences between can and could, where they can be utilized, and under what circumstances they could be utilized. I want everybody, regardless of the background you are coming from, be it English medium background, Gujarati medium background, or Hindi medium background, I am sure this is going to be helping you out immensely. Okay, so can and could, ये ज्यादातर बच्चों में ये issues रहता है कि सर कैन एंड कुड में ये इश्यू रहता है कि पीपल आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि सर कैन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए, कुड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए. सो बहुत छोटा सा है. सो कैन का इस्तेमाल होता है व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट एबिलिटी. मैं ये चीज कर सकता हूँ. आई होप एवरीबॉडी इज लिसनिंग. यस और नो? इज एवरीवन लिसनिंग टू मी? Okay, great. So can is utilized for mentioning ability. Thank you, students. Thank you for answering. Okay, so can is utilized for mentioning ability. For example, I can play the guitar. He can lift heavy weights. She can beat anyone at chess. वो किसी को भी chess में मात कर सकती है. So when I am talking about ability, it is at that point of time I utilize can. मैं ये कर सकता हूँ. उसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल द सेम थिंग इफ आई वांट टू यूटिलाइज इन पास्ट टेंस, मैं पहले ये कर सकता था. कैन जब मैं यूज कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर सकता हूं और मैं वही चीज कर सकता था. सो कुड इज नथिंग बट द पास्ट टेंस ऑफ कैन. सो उसी जो ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस, इफ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू यूटिलाइज कुड इन दैट, तो आई कैन से आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल. मैं जब स्कूल में था तब गिटार बजा सकता था. पहले स्कूल में था तब बजा सकता था, अब मैं नहीं बजा सकता. ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स अंटिल ही हैड द एक्सीडेंट. मतलब कि मैं हैवी वेट्स लिफ्ट कर सकता था, बट देन आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड नाउ आई नो मोर और नो लॉन्गर लिफ्ट हैवी वेट्स. She could beat anyone at chess in her prime. मतलब जब वो प्राइम पे थी, जब अपनी वो for example, she was at the top of her game, she was able to beat anyone at chess. Right now she is not able to beat anyone. I mean, she may be able to beat anyone, but in the prime, I mean in the past, she was able to beat anyone. I hope this is clear to you. तो पहला जो usage है can and could का is about the ability. Can is utilized for current ability and could is utilized for past ability. Any questions or any doubts in that, students? So first thing आपने नोटबुक में लिख दीजिए, can का और could का पहला जो इस्तेमाल होता है is about the ability. The second usage of can and could is about the possibility. Now ये चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे काफी गलतियां होती है बच्चों से. When you are talking about possibility, तो could में जब हम अपने निजी लाइफ की possibility की बात करते हैं, then you can utilize the word could in present, future and past, all three of them. For example, the train could be late. ट्रेन आने वाली है. फॉर एग्जाम्पल आप स्टेशन पे खड़े हो, 2 दोस्त बात कर रहे हैं, क्या लगता है ट्रेन का अभी तक आई नहीं, तो आप बोल सकते हो द ट्रेन कुड बी लेट, वो शायद लेट हो सकती है. सो यू आर यूटिलाइजिंग कुड, ऑल्दो इट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, बट यू आर स्टिल यूटिलाइजिंग कुड to show the possibility in the present. You can also utilize could in the future. If you don't study, you could fail the exam. अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आप शायद एग्जाम फेल कर सकते हो. So that is what we talk about future. Robert could have gotten this job if he had gone to the interview. वही could का इस्तेमाल मैंने पास्ट में किया, लेकिन वो तीन जो सेंटेंसेस है are basically mentioning the possibility कि ये हो सकता था. पास्ट में भी ये हो सकता था अगर आपने ये किया होता, तो अगर आपने जॉब मिल जाती अगर आपने इंटरव्यू में गए होते तो. सो इट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी. पहली जो है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, दूसरी जो है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, और तीसरी जो है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी है. कैन वो भी पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल थिंग, फॉर एग्जांपल यू कैन कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन. नाउ ये चीज जो है वो आप तक सीमित नहीं है, किसी और तक सीमित नहीं है, किसी के लिए भी ये लागू पड़ती है. So when we talk about everything in general, when we talk about something which is happening in the world which is common to most of you, then we can utilize can in the general possibility. जैसे कि traveling across Europe can be quite expensive. You don't need to say could be quite expensive. You would say can be quite expensive because it's a generalized truth. तो मैं बताना चाहूंगा वापस से, possibility दोनों में could और can का इस्तेमाल हो सकता है. कुड जब आपके अपने निजी मामले की बात करते हैं, उसमें आप प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बाद, जैसे कि आप अपने पिताजी से बात करते हैं, माताजी से बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू योर स्पाउस, सिबलिंग्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, देन यू शुड बी यूटिलाइजिंग कुड. लेकिन अगर आप जनरल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, देन यू शुड यूटिलाइज कैन. इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? दोनों में फर्क पड़ा आपको? कुड और कैन पॉसिबिलिटी में कहां पे इस्तेमाल होता है? यस और नो एवरीबडी?
I want you people to let me know. Understood? पहला क्या था? What was the first usage of can? पहला क्या था? Can you tell me once again? What was the first usage of can and could? बताओ मुझे. फर्स्ट का क्या था? इट वॉज अबाउट द एबिलिटी. लिखा होगा, जिसने लिखा होगा उसको फायदा होगा, जिसने लिखा नहीं है वो ऐसा सोच के चलता है कि सर ने पढ़ाया और मुझे वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग तो गए. इज इट गेटिंग क्लियर? सो फर्स्ट यूजेज ऑफ कैन एंड कुड इज अबाउट द एबिलिटी, एंड वो कैन में एबिलिटी, कैन आई मीन कैन इज अबाउट प्रेजेंट एबिलिटी, और कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी की बात चलती है. नाउ सेकंड जो यूज है, द सेकंड यूज इज अबाउट द पॉसिबिलिटी. मैंने पॉसिबिलिटी ये बस समझाया कि अगर आप अपने लाइफ के बारे में बात करते हो, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में, देन यू आर टॉकिंग अबाउट, देन यू नीड टू यूटिलाइज कुड. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल पॉसिबिलिटी, मतलब निजी है, जनरल ट्रूथ है, यू कैन यूटिलाइज कैन. Okay, so this is the second usage of can and could. The first one was ability, second is possibility. तीसरा जो है is about making polite expressions. अब उसमें चार चीजें हैं. अब चार चीजों में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है. पहला है एबिलिटी, दूसरी है पॉसिबिलिटी, तीसरा है पोलाइट एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल, मेकिंग सजेशंस. आप किसी को सजेशन देना चाहते हो. वी कुड ट्राई दैट न्यू इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट. दो दोस्त तीन दोस्त बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आज, खाना तो बाहर जाना है, तो क्या कर सकते हो? तो आप ये कह सकते हो, वी कुड ट्राई दैट न्यू इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट. दिस इज द राइट इंग्लिश. आई मीन यू कैन ट्राई, वी कैन ट्राई कह सकते हो आप, but this is more formal and proper English. We could try new Italian restaurant tonight. You could ask your sister to lend you some money. आपके पास पैसे नहीं है, so you're for example you are telling your friend कि क्यों ना आप अपने sister से पैसे मांग सकते हो. You can ask her to lend you some money. So you are talking about making suggestions. तो तीसरे polite expressions में पहला है making suggestions, जिसमें could का इस्तेमाल होता है. Making request. अब यहां पे ध्यान रखना है, काफी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं. सेल एक्सप्लेन यू दिस वे. कैन यू पास मी द सॉल्ट? आप फैमिली मेंबर्स बाहर खाना खाने गए हो, यू हैव गॉन आउटसाइड टू कंज्यूम फूड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. या यश, आर यू एबल टू लिसन टू माय वॉइस? इज एवरीवन एबल टू लिसन टू माय वॉइस? यस और नो? बिकॉज वन स्टूडेंट इज टेलिंग दैट ही इज नॉट एबल टू लिसन टू मी. एवरीबॉडी ओके? तो यश जी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपके तरफ से ही कोई प्रॉब्लम है. इज इट गेटिंग क्लियर यश? ओके, try it out from your okay. So तीसरा जो दूसरा एडवांटेज है, दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरा मेकिंग सजेशंस. हाँ, हम लोग थे मेकिंग रिक्वेस्ट पे. तो मेकिंग रिक्वेस्ट में इतना याद रखना है, where were we were basically going to the restaurant. हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे थे, फॉर एग्जांपल, एंड यू आर सिटिंग विथ योर फैमिली मेंबर्स इन दिस रेस्टोरेंट. आपके साथ आपके पिताजी है, माताजी है, आपके फॉर एग्जांपल अदर फैमिली मेंबर्स है, और बाजू में सॉल्ट पड़ा है, लेकिन आप उसको रीच आउट नहीं कर पाते. अपने भाई को बोलते हो, तो अपने भाई को ऐसा बोलोगे, कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्योंकि इट इज मोर इनफॉर्मल. आप अपने भाई से बात कर रहे हो, तब आप ऐसा बोलोगे, कैन यू पास मी द सॉल्ट. या तो फिर कैन आई स्पीक टू राहुल, आपका दोस्त है, तो कैन आई स्पीक टू राहुल, आप ऐसा कह सकते हो. लेकिन फर्ज करो आप अपनी कंपनी की मीटिंग में गए हो, और कंपनी के सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, आपके बॉस है, आपके फॉर एग्जांपल मोर फॉर्मल टाइप है, देन यू शुड यूटिलाइज कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज. अगर आप प्लीज का इस्तेमाल करते हो तो कुड करना ही है. लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो, लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं हो, यू आर इन अ फॉर्मल मीटिंग, then it is much more advisable to utilize could you pass me the salt please नहीं बोलोगे तो भी could you pass me the salt. तो याद आपको पता चल गया होगा what I am trying to say. when you are talking about more informal meeting और informal conversation और request करना चाहते हो, तो आप can का इस्तेमाल करोगे. but if it is more formal, you are talking to your boss, you are talking to someone whom you do not know, तो आप could का इस्तेमाल कर सकते हो. तो पहला polite expressions में आता है making suggestions, दूसरा है मेकिंग रिक्वेस्ट, थर्ड इज मेकिंग ऑफर्स. फॉर एग्जांपल कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक. आप अपने पिताजी से बात करते हो, पिताजी बोलते बहुत प्यासा हूं मैं, तो आप बोलोगे कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक. लेकिन आप अपने बॉस से बात करते हो, कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक सर. ओके, देन कैन आई हेल्प यू विद दैट. यू आर टॉकिंग टू योर स्पाउस, शायद वो बैग उठा रही है और बैग आपने उससे उठ नहीं रही है, तो आप बोलोगे कैन आई हेल्प यू विद दैट. अपने वाइफ से बात करते हो, but you are talking to a madam, for example, you are not knowing, it's more formal, could I help you with that madam. तो आप ये कह सकते हो. तो याद रखना है
कैन और कुड में बड़ा फर्क है. कैन इज बेसिकली मोर इनफॉर्मल, कुड इज बेसिकली मोर फॉर्मल. परमिशन की बात करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन. आपके दोस्त के साथ बैठे हो, आईएलटीएस के क्लासेस में, आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम दे रहे हो, दोनों जानते हो एक दूसरे से, आपकी पेन बंद हो गई, अपने दोस्त को बोलते हो कैन आई बोरो योर पेन. लेकिन आप ऐसे क्लास में हो जहां पे आप एक दूसरे से बात नहीं, आप जानते नहीं हो, तो आप बोलोगे कुड आई बोरो योर पेन प्लीज. दैट्स हाउ यू शुड स्पीक. दैट इज आस्किंग फॉर परमिशन. वैसे ही कैन आई टेक द डे ऑफ टुमारो, आप अपने बॉस से ही बात करते हो, लेकिन बॉस के साथ ताल्लुकात आप कैसे हो गए, आप कंपनी में काफी सालों से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस लास्ट 15-20 years and you know each other. For example, even if he or she is your boss, you know each other, then you need to speak, can I take the day off tomorrow? But you are talking to a boss who is very strict, you are not knowing exactly what his reaction is going to be. तो आप ऐसा कह सकते हो, could I take the day off tomorrow? Could I take the day off tomorrow? This is how you should speak. Any questions, any doubts? So these are the few fundamental differences between can and could. I repeat, let me just go through it once again. First one was ability. I am repeating the same thing. First one was ability, present ability or past की ability, very very important. Then second is possibility. Possibility में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मैंने बताया था, when you are talking about yourself with your family members, तो आप पॉसिबिलिटी में कुड का इस्तेमाल करोगे. लेकिन वही जनरल पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल विंटर्स कैन बी फ्रीजिंग इन न्यू दिल्ली, क्योंकि आप जानते हो न्यू दिल्ली में विंटर्स बहुत ठंड वाले होते हैं, मतलब बहुत ठंडी होती है उसमें. सो विंटर्स कैन बी फ्रीजिंग इन न्यू दिल्ली, सो इट्स अबाउट जनरल पॉसिबिलिटी. ओके, देन द थर्ड इज अबाउट मेकिंग सजेशंस, जहां पे आप कुड का इस्तेमाल करोगे. सजेशंस में सिर्फ और सिर्फ कुड का इस्तेमाल होगा. रिक्वेस्ट, ऑफर्स और परमिशन में इतना चीज याद रखना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ फॉर्मल मैनर, तो कैन का इस्तेमाल कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी कुड का. और अगर आप अपने दोस्त से बात करते हो तो आप कैन कह सकते हो. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन दिस माय डियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? Okay, very good. Now I'm going to throw you a small exercise. I'm going to throw you a small exercise. I want you to do questions number 1 to 5. बाद में मैं आपको solve कराऊंगा. I'll be basically helping you out with that. Just do it. 1 to 5. Questions number 1 to 5. Just go through it. Let me see what you are coming up with. Questions number 1. अपने notebook में answers लिखिए. Write your answers in your notebook. Let me know you are done. When you are done, I'll be sending, giving you 3 more questions. Don't send me the answers. I'm going to discuss the answers afterwards. तीन चीज का याद रखना है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पोलाइट एक्सप्रेशंस. इफ यू आर डन, लेट मी नो. Okay, let me get the answers afterwards. Yeah, have you written down the answers, students? अपने answers आपने notebook में लिख दिए? Okay, okay, let's go for questions number, हाँ ये बाकी के हैं 6, 7 and 8. थोड़े से मिस हो रहे हैं, डॉट दिखेंगे आपको. 6, 7 and 8. Questions number 6, 7 and 8. Just last 3. This dot is AB is also is one question. That is question number 6. Then 7 and 8. Done? Okay.
Now let me get to the answers. These are the answers, students. I don't know how many of you. Could I get you something to eat? Maybe a sandwich. Can I get something to eat? Maybe a sandwich. It's basically more informal expression. तो हमने can का इस्तेमाल किया है. I could run a mile in 10 minutes when I was younger. So मैं जब young था तब मैं कर रहा था, तो मैंने बताया था past की जो ability है उसके लिए आप could का इस्तेमाल करोगे. Son, mom, the phone is ringing. Mom, can you answer it? मॉम है तो आप जाहिर है वो कुड नहीं बोलेगी, वो कैन ही बोलेगी. और फ्यूचर की बात कर रही है कि ये क्या हो सकता है, इट कुड बी ग्रैंडपा, ये ग्रैंडपा हो सकते हैं. सो यू आर टॉक अबाउट फ्यूचर थिंग. इज इट गेटिंग क्लियर? पॉसिबिलिटी है. कुड यू सेंड मी द डिटेल्स, या कुड यू सेंड मी द डिटेल्स बाय ईमेल प्लीज. प्लीज आता है तो जाहिर है आगे कुड लग ही जाता है बाय डिफॉल्ट. कुड आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ दैट केक प्लीज? सो द आंसर इज गोइंग टू बी कुड. सो फर्स्ट इज कैन, कुड, can. I don't know how many of you got it right. ये जरा सा देख लेना. You can take a screenshot of this as well. This will help you out in the future. Okay, then the second part for 6, 7 or 8. I need to finish this report by tomorrow, but I don't think I can do it. So I can do it is about the possibility. ये possibility की बात है तो can आएगा. B, you could ask one of your colleagues to help you with. You are making suggestion. तो मैंने बताया था कि suggestion की बात चलती है तो आपको could का इस्तेमाल करना पड़ेगा. याद हो तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आपके अगर पास पैसे नहीं है तो अपनी सिस्टर से मांग सकते हो, तो हमने कुड का इस्तेमाल किया था. मैनी स्विमर्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ. ये जो 7th है, इट्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. मैनी स्विमर्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ. याद है मैंने बताया था व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी अब अंदर अंदर की बात है तो कुड का इस्तेमाल करोगे, बट जनरल पॉसिबिलिटी है यू आर गोइंग टू यूटिलाइज कैन. हस्बैंड, हाउ डिड द कैट गेट इनटू द हाउस? वाइफ, it could have gotten in through the bedroom window. तो ये बेसिकली पास की बात है, तो आंसर इज गोइंग टू बी could. Any questions, any doubts, my dear students? एक चीज को वापस, in case if there are any doubts, you can always go to the video once again that I'll be posting tomorrow, so that you can clear out all your doubts. But I hope you must have now got general idea of when to utilize can and could. Understood, students? Yes or no? Very good. डोंट वरी अबाउट गेटिंग ऑल राइट और नॉट, बट आपको ये एग्जैक्टली आ जाना चाहिए कि मैं क्या पता हूँ. 8 का देखो, इट कुड हैव गॉटन. विपुल, इट कुड हैव गॉटन मतलब वो पास की बात है ना, पास की बात है. सो दैट्स द रीजन वी आर यूटिलाइजिंग कुड. अंडरस्टूड? ओके. Okay, now let's go for the new slide now. Let us go for the new slide. Okay.